Excellencies, I would now invite the leaders to make their remarks. First, we will have the Honorable Prime Minister. Your Highnesses, Excellencies, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर सोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir.
India and the United States of America co-chair this initiative. And now, as the co-chair, I invite the President of the United States for his remarks. Well, ladies and gentlemen, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 Summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Together with our partners, we're working to mobilize the trillions of investment needed to close infrastructure gaps around the world, including the formation of a new investor forum that the United States will host in a couple weeks. Let me close with this. The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future, all of our futures for decades to come. A point where our investments are more critical than ever. So together, let's continue to work as one to seize this moment in history and maximize our collective investments. To find new partners, to unlock new capital, because when we invest in low and middle income countries, all countries benefit. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. So I want to thank you again for being here. I look forward to working with all of you, and I'm going to turn it back to the Prime Minister. Thank you. Thank you, Excellency. We now invite the Crown Prince and the Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia for his remarks. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذه وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه. In conclusion, I'd like to commend the PGII launched by President Biden with the participation of Saudi Arabia in $20 billion. We look forward to the integration of the initiative and the Economic Corridor project, which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. My best regard to you all. Thank you, Your Highness. May I now invite the President of the European Commission for her remarks, please. Your Highnesses, Excellencies, it's been 2 years since we launched PGII, a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need. And 2 years on, more large-scale projects are seeing the light, and we are presenting 2 of them today. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster, with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline
to foster clean energy trade between Asia, the Middle East, and Europe, with a high-speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world and create business opportunities all along the way. These are state-of-the-art connections for the world of tomorrow, faster, shorter, cleaner. This corridor is much more than just a railway or cable. It is a green and digital bridge across continents and civilizations. And this is also the spirit of the second project we announced today, the Trans-African Corridor, which will connect the port of Lobito in Angola with the Katanga province in DRC and the Copper Belt in Zambia. Our goal is not only to connect a landlocked region to the sea. Our partnership will also invest in local value chains, in clean energy, and in skills for the local workforce. This is the spirit of PGII. It is a whole new approach to large infrastructure investment. It is about shared prosperity. It is about real benefits for all partners. Thank you. Thank you, Excellency. May I now invite the President of France for his remarks, please. Thank you so much. Everything was said, so I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting and President Biden for sharing this meeting with him. We are committed, and we had several exchanges with my friends Mohammed bin Zayed, and I want to thank you, Your Highness, and Mohammed bin Salman, Narendra Modi, and